We have some time. If there's any questions, I'm happy to entertain them, or comments also. कोई प्रश्न है या समीक्षा है तो बोल सकते हैं, कर सकते हैं. माइक दे दीजिए पीछे. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for enlightening us. My question is that I have read in Veda base that books are more important than lectures and conversations, something like that. And as you said that there are only 22% in the books. So how to understand that? We have to take reference for the books, then understand other things, or how to understand? आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए. His question is Oh, yeah. We've all heard that. We've all heard, there's a pecking order of what's important, right? तो ये तो सदैव होता है कि एक ऑर्डर होता है, एक श्रृंखला होती है कि पहले क्या फिर क्या, वो तो सदैव होता है, श्रेणी होती है. Yeah. That's also pulled out quite often before book distribution marathons. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन से पहले भी कई बार ये चीजों को बोला जाता है कि हाँ ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण है. Explain to me this. Explain to yourself. Explain to yourself. तो अपने आप को ये बात समझाइए. When Prabhupada saw somebody who was good at art, प्रभुपाद ने जब किसी को देखा जो कि आर्ट में अच्छा था, he gave them that service. तो प्रभुपाद जी ने उसको वो वाली सेवा दे दी. When Prabhupada saw someone who was good at management, he gave them that service. प्रभुपाद जी ने किसी को देखा कि मैनेजमेंट में अच्छा है तो उसको वो वाली सेवा दे दी. When Prabhupada wanted everyone to participate in activities, he told us. और जब प्रभुपाद जी ने कुछ सेवाओं में सबको चाहते थे कि सब लोग जुड़े, तो प्रभुपाद जी ने बताया. Prabhupada wrote me. प्रभुपाद जी ने मुझे पत्र लिखा. Make films about Krishna. कृष्ण के बारे में फिल्म बनाइए. He funded Yadavar's first film back in 1971 from the book fund, the BBT book fund. 1971 में यदुवर प्रभु की जो पहली मूवी बनी थी, तो प्रभुपाद जी ने बीबीटी फंड से धन निकाल कर उनको दिया मूवी बनाने के लिए. He didn't tell him, you can't do book distribution, you're not good at that, or you're not suitable for that, so you just make films. That'll be not quite as good, but you can do it. प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ग्रंथों का वितरण नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम बस मूवी बना लो, उतना अच्छा तो नहीं है पर चलो कुछ तो हो जाएगा. When you take prasadam as a book distributor this morning, you go to the prasadam hall. यदि आप ग्रंथों का वितरण करते हैं और सुबह प्रसाद देने जाते हैं प्रसादम हॉल में, what if all the cooks said, this is not a very important service, we should be going out distributing books? तो यदि सब लोग वहां पे सब लोग कहें कि ये तो प्रसाद वितरण करने की सेवा उतनी अच्छी नहीं है, हम सब बाहर जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए. What if the pujari said, we shouldn't be doing pujari service, we should be out in the streets with the books? अगर पुजारी सब बोले कि हम तो अंदर नहीं जाएंगे ऑल्टर में, हम बाहर जाएंगे ग्रंथ बांटने के लिए. It's just a marketing ploy. तो ये एक तरह से मार्केटिंग का तरीका है. You have to do what you're inspired to do. तो जो आपके लिए प्रेरणादायक है, आपको वो करना है. You have to, you have work in your own nature. तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना है. Everything I do, I think of doing as supporting the distribution of Srila Prabhupada's books. मैं जो भी करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि प्रभुपाद के ग्रंथों के वितरण का सहयोग हो रहा है इस सेवा के माध्यम से. But Prabhupada's books now are also, there are those who are pushing Prabhupada's instructions and his books online. परंतु जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं या प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो ऑनलाइन भी दी जा रही हैं. And we're not very far away from when we get a chip and they put it here and we'll have all the books right up here. और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो ऐसा
बहुत दूर का समय नहीं है कि चिप आएगा हमारे दिमाग में घुस जाएगा और सारी ग्रंथ उसमें होंगे. It's coming right now. It's here, and they're going to put this thing in there. अभी हमारे हाथ में है वो चिप और बहुत जल्दी हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा. So then where's the instruction? Well, actually, everything in Prabhupada's books is more important. Is it more important than his lectures? तो फिर कहाँ ये बात रह जाएगी कि जो प्रभुपाद के ग्रंथों में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभुपाद के लेक्चर से? What do you think? क्या सोचना है आपके इस बारे में? क्या विचार है आपका इसके बारे में? Which is more important, lectures or books? तो क्या महत्वपूर्ण है, लेक्चर या किताबें? What's the answer? Lectures or books? What's his answer? Yeah, I said lectures महत्वपूर्ण है या ग्रंथ महत्वपूर्ण है? That means what? I asked what answer. What is the answer? क्या लगता है आपको कि प्रभुपाद के प्रवचन महत्वपूर्ण है या प्रभुपाद के ग्रंथ महत्वपूर्ण है? Asking me, Guruji. Actually, many devotees, I was reading one book that was based on mostly conversation of Prabhupada. So I was told some devotees, this is not important conversations, we have to go by books only. But I was not convinced by that statement, that books are more important. That's why I raised this question to you. Maybe you can clarify further. These are my law books for the next 10,000 years. How many times have you heard that? तो आपने कितनी बार ऐसे सुना है कि प्रभुपाद जी ने बोला है ये ग्रंथ जो हैं ये लॉ बुक्स हैं अगले 10,000 साल के लिए? How are you going to even begin to understand how Prabhupada deals with Desha, Patra, and Kala? प्रभुपाद जी ने कैसे देश पात्र और काल के अनुसार ये सब चीजें समझाई, इसको समझने की शुरुआत भी आप कैसे कर पाएंगे? Unless you read his conversations, hear his conversations, or read them. Hearing is reading. Reading is hearing. Read his conversations or read his letters. How do you know how he dealt with things? जब तक आप प्रभुपाद जी की जो पत्रावली है उसको नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की जो वार्तालाप है उनको नहीं पढ़ेंगे, तो समझ ही कैसे पाएंगे कि प्रभुपाद ने अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे अलग-अलग भक्तों को प्रोत्साहित किया? That's why I say this is called the hermeneutic approach to understanding Srila Prabhupada. तो इसीलिए इसको वो अप्रोच बोला गया जो प्रभु जी ने बताया. There are those that think, oh, this hermeneutics, it's a Western thing, it's coming, it's gonna, it's not the real way you understand Prabhupada. तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो पाश्चात्य जगत का है, ये वो तरीका नहीं है प्रभुपाद को समझने का. Well, I don't see what's wrong with studying everything that Prabhupada said and wrote and all of his Vani, the other 78% of his Vani, that's all less important? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता कि जो प्रभुपाद ने ग्रंथों के अलावा पत्र लिखे हैं या वार्तालाप किए हैं या प्रवचन दिए हैं, 78% है, क्या वो बेकार है सब? It's all on the absolute level. ये सब परम सत्य की तरह ही है. And there's a chronological issue also. और उसमें एक श्रृंखला भी है. There are those that say, well, what he said in 1968 is not as important as what he said in 1978 because he was making changes to things and the way he dealt with things. हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने 1968 में बोला और 1978 में बोला, तो 68 में बोला हुआ उतना प्रभावशाली नहीं था या उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 78 में कुछ बदलाव भी हुआ परिस्थिति का. And that's very true. और ये बात सच भी है. So that has to be seen in the context of time. तो ये जो जैसे समय आगे बढ़ रहा है और परिस्थिति है उसके संदर्भ में इस चीजों को देखना पड़ेगा. So a serious student has to put in the time reading. तो जो एक गंभीर भक्त है उसको समय लगाना पड़ेगा इन सबको पढ़ने में. I just was looking at the bookstore. There's some amazing books I haven't even seen that are available. तो मैं बुक स्टोर में देख रहा था और मैं देखा कि इतनी अद्भुत कई पुस्तकें जिनके बारे में जानता ही नहीं था. Some of the greatest reads you'll have are Chasing Rhinos with the Swami by Swamasundar Prabhu.
तो श्याम सुंदर प्रभु के उदाहरण के लिए एक पुस्तक है गैंडों का शिकार या गैंडों के पीछे भागना प्रभुपाद के साथ, ये पुस्तक है. He actually wrote the first volume while living with me. और जब पहला वॉल्यूम लिखा श्याम सुंदर प्रभु ने तो हम साथ में ही रह रहे थे. His research was impeccable. His memory was so intact. It was phenomenal how he put these books together. तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि श्याम सुंदर प्रभु ने उस पुस्तक को लिखने के लिए कितना अधिक रिसर्च किया और उनकी याददाश्त कितनी तीव्र थी, सब कुछ उनको स्मरण था और बहुत पूरी जान लगा दी उन्होंने पुस्तक लिखने में. Prabhupada is you can't completely understand him, but you can feel him. तो प्रभुपाद जी को पूरे तरीके से समझना असंभव है, परंतु प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा आप अनुभव कर सकते हैं. And then you take that with you wherever you go. You're really distributing, like Prabhupada's like the Jesus Christ of our time. तो प्रभुपाद जी जिस तरह हमारे आधुनिक समाज में जीसस क्राइस्ट की तरह हैं, उनको अनुभव करके अपने साथ लेके जा सकते हैं. His fame will be spread throughout all the three worlds. उनका यश तीनों लोकों में फैलेगा. And he nailed the Sunyavadi nonsense. और श्रील प्रभुपाद ने जो शून्यवाद है उसको कील से ठोक दिया. That is our true mission, to direct people to the absolute truth, who is Krishna. हमारा वास्तविक आंदोलन है लोगों को परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ मोड़ना. And we're just helping them step by step along the way. और हम क्रमशः लोगों की सहायता कर रहे हैं उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए. Because not all of us are so fortunate that we get it right away. क्योंकि हम सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि एकदम चुटकी भर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा. But when you get it, when you actually you understand, oh, I see that little boy with a flute tending the cows, he's supreme. परंतु जब हम इस बात को समझ लेंगे, ओ वो जो छोटा सा बालक है जिसके हाथ में मुरली है और जो गौओं को चरा रहा है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है. Then you can realize what Prabhupada meant, what the title means. I don't know if Prabhupada said it. Chant and be happy. तो फिर आप समझ पाएंगे जो प्रभुपाद जी का भाव था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए. Anybody know what that actually means?